हेलो एवरीवन। आज आम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 डिस्कशन करिया। काली आम 50टा क्वेश्चन पार्ट 1 रे शेष करछे। आज पुणी आउ 50टा क्वेश्चन आज आम प्रैक्टिस करिया। तो चलंतु स्टार्ट करिया आज हमर क्लास। एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज यर डैश IBM 1401 1620 NCR 395 ना इनियाक इडिवाक इनिवाक ना B6500 IBM 350 would have answer ना IBM 1401 1602 is the right answer। गोटे कलर चेंज कर दो रेड कर दो। ठीक अच्छे। देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन ना which generation of computer is covered by the period 1965 to 71 को जनरेशन कंप्यूटर कभर रही तो कौन हम फास्ट जनरेशन ना सेकेंड जनरेशन ना थर्ड ना फोर्थ कौटा हम थर्ड जनरेशन इज द करेक्ट आंसर। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन के द ICGP used in a computer is generally made up of which among of the following। ICGP आमर कौन तैयारी थाए सिलिकन तैयारी थाए ना क्रोमियम ना गोल्ड ना लीड ईटिंग कौन थाए यहाँ समस्त जानी तो सिलिकन। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलिकन इज ए डैश मटेरियल यहाँ आमर OSSSC आयुर्वेद पढ़ा सिलिकन टा गोटे कौन ना सेमीकंडक्टर। इन व्हिच जनरेशन डिड मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टार्टेड को जनरेशन आमर मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता कौन कौन देला ना फास्ट जनरेशन ना सेकेंड जनरेशन ना थर्ड ना फोर्थ को जनरेशन होता थर्ड जनरेशन होता। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंपटीशन बिकम पॉसिबल इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन कौन कौन देला ना फास्ट जनरेशन ना सेकेंड जनरेशन ना थर्ड ना फोर्थ कौन ना थर्ड जनरेशन रे टाइम शेयरिंग एंड ऑनलाइन कंपटीशन। ये बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन को जनरेशन रे कौन आम रही तो टिके ध्यान सहित मन रखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरीज वाज इंट्रोड्यूस इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बढ़िया क्वेश्चन कौन हम आंसर ऑप्शन कौन कौन दे देखिए सेकेंड ना थर्ड ना फोर्थ ना फिफ्थ को जनरेशन हम ना थर्ड जनरेशन रे। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज यार कौन थर्ड जनरेशन एडवांटेज लैंग्वेज कौन थिला कौन दे ऑप्शन स्मॉलर इन साइज मोर रिलायबल यूज लेस एनर्जी कोड़ा हम ना तीन टा जाक हम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑफ चिप वाज इंट्रोड्यूस इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कोड़ा फास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोड़ा हम फोर्थ जनरेशन रे आमर कौन यूज कले लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। देन नेक्स्ट जुआ एटा आमर हला चार्ट टेबलटा को जनरेशन रे आमर कौन यूज होइछि देख फास्ट जनरेशन आमर केबेठु केबे रहिला ना फास्ट जनरेशन आमर 1946 रु 1959 माने केते 1959 मसीहा जाए रहिला से कौन यूज कराला ना वैक्यूम ट्यूब को मेमोरी यूज कराला मैग्नेटिक ड्रॉप। एग्जांपल कौन ना इनियाक आउ मशीन लैंग्वेज। तापर सेकेंड जनरेशन रे कौन आमर कराला ना ट्रांजिस्टर। मेमोरी टाइप रे कौन मैग्नेटिक कोर। एग्जांपल कौन देला ना टाइम शेयरिंग इंट्रोड्यूस जोटा आम आ पछ क्वेश्चन रे आम देखिथिले। थर्ड जनरेशन केबे हेतिला ना 1965 टू 1971 प्रति 5 वर्ष गैप प्राय चेंज होती से आमर कौन यूज है ना इंटीग्रेटेड सर्किट तार मेमोरी रहा पीरोम डीराम कैच आउ सिलिकन एरा तार एग्जांपल। तापर फोर्थ जनरेशन रे कौन यूज है ना VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तार मेमोरी टाइप कौन ना स्टैटिस्टिक ग्राम। जो आम मेमोरी चैप्टर को जीवा से आम सब मेमोरी विषय पढ़ा तार एग्जांपल कौन ना राइज ऑफ PC एंड सर्भर को से कौन गला ना ग्रो गला।
एतिक मन रख एतिक क्वेश्चन 100% गोटे ही गोटे आसो कौ सिफ्ट रोना कहीं आसो ही आसो। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कोड़ा हम ना मेसिन लैंग्वेज ना सी लैंग्वेज ना फॉर्टा ना एसक्यूएल कोड़ा हम ना एसक्यूएल एसक्यूएल रो फुल फॉर्म मते कमेंट रे करे जणैबो आमे पढिबा सब मेमोरी चैप्टर को आमे जिबा आमे सब किछि पूरा डिटेल्स पढिबा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच जनरेशन फ्लॉपी डिस्क वाज इंट्रोड्यूस को जनरेशन रे हमर फ्लॉपी डिस्क टा इंट्रोड्यूस हैतिला कौन कौन ऑप्शन देछि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन जेंदी अछि तार लेखा गुडा भी सेंदी अछि ए फर्स्ट रे फर्स्ट बी सेकंड रे सेकंड सी थर्ड रे थर्ड डी फोर्थ रे फोर्थ मन रखिया सुविधा हबो कोडा हबो थर्ड जनरेशन रे हमर फ्लॉपी डिस्क इंट्रोड्यूस हैतिला। देन नेक्स्ट जुआ ओराकल वाज इंट्रोड्यूस इन को जनरेशन रे ओराकल टा हमर को जनरेशन रे हैतिला फोर्थ जनरेशन रे एडा आसीतिला ओइसे बाहर भी प्रीवियस थरा आसीतिला क्वेश्चन। देन नेक्स्ट जुआ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोर्थ जनरेशन वाज कौन ऑप्शन बी VLSI वेरी लार्ज कौन स्केल इंटीग्रेशन व्हिच जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट एटा गोटे ऑप्शन भी कटि जाय फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन सिक्स्थ जनरेशन कोडा हबो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यूज 4 रे VLSI गला फिफ्थ रे कौन आसीबो ना अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड केमिति हेतिला पैरेलल ना सीक्वेंशियल बोथ ए एंड बी ना वर्टिकल पैरेलल आउ सीक्वेंशियल दीटा कहिदिला। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेंटिनियम 4 कंप्यूटर्स इज एग्जांपल ऑफ अ डैश जनरेशन को जनरेशन रहिदिला फिफ्थ जनरेशन। द मेन डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी कोड हबो ऑप्शन कौन कौन देछि ना लिबरल एंड माइक्रो प्रोसेसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सट्रीमली लो कॉस्ट ना वर्सेबिलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा एबे समस्त हम यूज करछे एआई टिके एडवांस क्वेश्चन न नेले होबनी कंपटीशन ना बहुत टिके चलछि ना एबे तो सेति टिके टिके एडवांस क्वेश्चन भी निया हैछि। ए माइक्रो कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज कोडा हबो ऑप्शन कौन कौन देछि ए स्मॉल लो कॉस्ट डिजिटल कंप्यूटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर ए स्टोरेज यूनिट एंड इनपुट आउटपुट चैनल ऑल ऑफ द अबव माइक्रो कंप्यूटर गुडा करे कौन अछि ना तीन टा हबो कौन हबो ऑप्शन ना ऑल ऑफ द अबव हबो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज आर द least powerful yet most widely used and fastest growing computer कोडा हबो माइक्रो कंप्यूटर आम पछ क्वेश्चन रे आम देखिले माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन अच्छे सुपर कंप्यूटर तो हबनी मेन फ्रेम तो से बहुत बड़ तो माइक्रो कंप्यूटर हवा राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ए माइक्रो कंप्यूटर इज ए स्मॉल रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंप्यूटर विथ ए माइक्रो प्रोसेसर व्हिच इज द फास्ट माइक्रो कंप्यूटर कोड आमर फास्ट माइक्रो कंप्यूटर Z2 Titan 1 Mark B Altair कौन Altair। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज PC एटा तो समस्त जानी थियो। एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप इज आर कौन एप्पल IBM डेल ऑल ऑफ द अबव कोडा हबो ऑल ऑफ द अबव ऑल ऑफ दिस हबो। क्वेश्चन 24 कौन देला ना कंप्यूटर्स डाटा आर पोर्टेबल एंड कन्वीनिएंट फॉर यूजर्स हु ट्रैवल आर नोन एज आम गोटे ट्रैवल नहीं सुपर कंप्यूटर ना लैपटॉप ना मिनी कंप्यूटर ना फाइल सर्वर्स लैपटॉप ए पोर्टेबल कंप्यूटर कोडा सी कौन देला देख
has low memory is the computer that is used only by business people, is compact and lightweight enough to be transported from place to place. ଏଇଟା ଅପସନ୍ କ'ଣ ନା ବିଟା ଏଇଟା କଟି ଯାଇଛି ଟାଇପିଂରେ, ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଦର ଏ ଅର୍ ବି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଲ୍ୟାପଟପ୍ସ। कौन कौन ऑप्शन देला ना computers used clinical laboratories, a computer manufactured by compact, a computer having voice recognition system, lightweight computers, small enough to fit in a small suitcase। कोड़ा हबो ना ऑप्शन डी is the right answer। then next question, portable computer also known as laptop computers weighing between 4 and 10 pounds in called general purpose application, internet, scanner, notebook computer। कोड़ा हबो notebook computer। then next question, which of the following is the smallest computer। ए भितर हमर कोड़ा smallest computer, notebook, laptop, desktop, workstation। notebook समझ देखी कि नहीं। Question number 29, a computer also referred to as a laptop is a small lightweight personal computer that encrypts the screen, the keyboard, storage and the processing component into a single portable unit। कोड़ा notebook, journal, diary, briefcase। कोड़ा हो notebook। which of the following can be considered as a portable computer, mini computer, mainframe computer, desktop, PDA। कोड़ा हो PDA। a personal computer designed to meet the computing need of an कोड़ा ना individual। then next, a mini computer defined as, मिनी कंप्यूटर को आम केमती कह ना ए स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर व्हिच नॉर्मली इज एबल टू प्रोसेस एंड स्टोर डाटा मोर दैन माइक्रो कंप्यूटर। सेटा हम ना कंप्यूटर व्हिच डज नॉट कंसिस्ट हार्ड डिस्क, द स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ना ऑल ऑफ द अबव। कोड़ा हम ना ऑप्शन ए हम द राइट आंसर। मिनी कंप्यूटर आर द कोड़ा आम ए कहले मल्टी यूजर सिस्टम। Characteristic of a mini computer is real time control, high performance workstation, special purpose system, both A and B। कोड़ा हो both A and B। then next is multi user systems provide cost saving for small business because they used a single processing unit to link several, is called कौन dumb terminals। then next which of the following is available in the form of a PC now। कोड़ा mainframe, microcomputer, mini computer, both A and B। कौन हम microcomputer is the right answer। then next a single bus structure is primarily found in dash, mainframe computer, super computer, high performance machine, mini and microcomputer। कोड़ा हो मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर। which of the following is general cost layer। कोड़ा हो सर्वर ना नोटबुक कंप्यूटर ना पर्सनल कंप्यूटर ना mainframe कंप्यूटर। which of the following is single user computer with many feature and good processing power। कोड़ा ना वर्कस्टेशन, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। कोड़ा हम वर्कस्टेशन। डैश प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेनफ्रेम कंप्यूटर। कोड़ा आम मेनफ्रेम कंप्यूटर यूज करचे बिटैक, पैरेलल, सीरियल, टोगल। कोड़ा हम बिटैक। Question number 41, dash are the special design computers that perform complex calculation extremely rapidly। कोड़ा सर्वर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, मेनफ्रेम कंप्यूटर। कोड़ा हम ना सुपर कंप्यूटर्स। then next question, which of the following is the most powerful type of computer। कोड़ा most powerful type of computer,
सुपर माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंडक्टर माइक्रो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कोड हब आंसर ना सुपर कंप्यूटर बहुत कंफ्यूज क्वेश्चन है A computer falls into the dash category if it is at the time of construction one of the fastest computers in the world. Mini computer, super computer, micro computer, mainframe computer. Koda na super computer. Then the next question. Which of the following computer is used in the weather forecasting? Notebook computer, super computer, tablet micro computers कोड हम ना सुपर कंप्यूटर PRAM is an example of बहुत बढ़िया क्वेश्चन OSSSC क्वेश्चन आसीथिला हमर कोडा सुपर कंप्यूटर to access mainframe or super computer user often use a terminal node desktop handheld कोडा हब ना ऑप्शन ए टर्मिनल in dash computers computation is carried out with physical quantities such as voltage length current temperature etc कोडा हब डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड माइक्रो कंप्यूटर कोडा ना एनालॉग रे तो सब जिंस माने कैरिड आउट करता है तापर कौन दिला ना द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज वेरी हाई लो मीडियम गुड कोडा हबो ना ऑप्शन बी लो देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड ए डैश सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम्स एटा तो समस्त जानि को सेमीकंडक्टर ना डेसिमल ना बाइनरी ना राम कोडा हबो बाइनरी Then as the last question, a computer that combines the characteristic of analog and a digital computer. कोडा combine एक थी वो hybrid computer ना digital computer ना analog computer ना super computer. कोडा हवा आंसर hybrid computer. Analog plus digital कौन हवा ना hybrid computer. तो आज ये थिला हमर पार्ट 2 50 क्वेश्चन देन आउ 50टा क्वेश्चन हम काली के आनिबा तो समस्त अनुरोध कि जे भी वीडियो देखु जंदी कंटिन्यू हमर वीडियो पडियो तो समस्त चैनल को कोन सब्सक्राइब आउ लाइक कर देबे थैंक यू।